सर 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, चेक पोस्ट भी तोड़ डाला। गाड़ी के कागजात नहीं है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है। नाम पूछा तो अपना नाम भी नहीं बताता। 경찰서로 때려받고도 덤덤하게 시간을 무는 남자. मौजे से गया। ये मेरे थाने में मेरे सामने सिगरेट पीता है। 그때 사방이 요동치며 중무장한 갱스터 형님들과 전투 헬기가 등장합니다. ड्राइविंग लाइसेंस। 남자의 신원을 확인하자 기겁하며 손을 벌벌 떨더니 इधर ही था ना? 내팽개친 시간을 냅다 주어 비굴하게 불을 붙여주죠. 이 남자의 이름은 부패 경찰의 잔혹행위에 맞서 무자비한 갱스터가 된 인간 로키입니다. Since 1951. 국민들에겐 황제라 불리지만 정부엔 최악의 범죄자로 낙인 찍혀 악마라 불리는 사나이 로키. बेटा, तेरी माँ को बचाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं होंगे। 엄마의 치료비로는 턱없이 부족했고 서서히 죽어가는 모습을 지켜볼 수밖에 없는 로키. 빈곤한 삶에 소름이 복받친 엄마는 아들에게 유언을 남깁니다. मुझसे वादा कर, तू दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। 유언을 마음속 깊이 새긴 로키는 힘과 부를 얻고자 갈등의 도시 뭄바이로 향합니다. 당시 뭄바이는 금이 안 거래되는 주요 장소였고 밀수업자 셰티와 두바이의 이나야 칼리는 끝없는 전쟁을 시작했습니다. 텃세 부리는 놈들은 흡심패주고 길거리를 전전하다 셰티 조직으로 스며들어간 로키. चल। पुलिस पुलिस उसा पुलिस। 하지만 구두 닦기로는 힘과 부를 얻을 수 없다는 걸 깨닫게 된 로키에게 어느 날 기회가 옵니다. वो साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? तू मारेगा? इंस्पेक्टर को कौन रे मारेगा? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? 뭄바이에서 큰일을 하려면 मर्द मिल गया रे साला। 자신의 이름을 알려야 했죠. 불이 나게 도망가다 갑자기 멈춰선 로키. उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? चल भागते हैं यहाँ से। उसको पता इच नहीं कि मैं कौन हूँ। याद रहेगा ना? साहब, वो मेरा लड़का है साहब, अंधेरी पे बिठाया था उसको। 로키의 깡따구와 도끼로 가득 찬 눈동자는 셰티의 마음을 사로잡았죠. क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया। 세월은 흘러 단숨에 간부급으로 성장하게 된 로키. 그러던 어느 날 두바이 이나야 칼리는 셰티의 앙숙조지 딜라와 손잡아 금밀수를 시작으로 뭄바이를 집어삼키려 합니다. दिलावर का ऑर्डर है, शेट्टी गैंग को पूरा मिटाना है। 그렇게 시작된 두 앙숙 조직의 전쟁. 경찰들마저 딜라에게 매수된 상황. 심지어 셰티 조직의 마지막 희망 로키마저도 잡혀버렸습니다. तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो? 하지만 이 상황은 로키가 계획한 시나리오였죠. 일부러 잡혀준 뒤 뭄바이에서 날고 긴다는 놈들을 한 곳에 모아 ये क्या रहा है? मार उसको! 모조리 제거해버리는 계획. साला अपन का खून भी तो लाली है। बचपन में ही बम्बई आ गया था, सीधा भट्टी में झोंक दिया गया। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी, और खंजर खाली काटता है। मारो! मारो इसको! हाथी का शिकार करने वाला बंबई में मिल गया है। रॉक
암흑 조직들을 깔끔하게 평정하고 금밀 수업으로 입지를 다져나가는 로키. 문바이에선 그 누구도 건드지 못하는 두려운 존재가 되었습니다. रॉकी का नाम पूरी बंबई में ही नहीं पूरे पश्चिमी तट पर भी सुनाई देने लगा है। बंबई में सब तेरे को सलाम ठोकते हैं सिर्फ रॉकी को छोड़कर। 호랑이가 개 밑에서 일할 수는 없는 법. 셰티를 제키고 문바이의 왕이 되려 하는 로키. 그런데 그때 시커먼 차가 들어섭니다. 기겁하는 셰티는 우산을 들고 냅다 뛰어가 누군가를 에스코트합니다. 예사롭지 않은 포스의 남자는 벵갈루루 서부 지역의 보스 앤드루스. बेंगलोर में मेरे लिए काम करना है अगर कर दिया तो पूरी बंबई तेरी। 손에 피를 묻히지 않고도 문바이의 왕이 될 수 있는 솔깃한 제안. 무조건 꼬였죠. गाड़ी बाहर की तरफ घुमा। 무슨 이유에선지 도로가 통제된 상황. सर बचाओ मुझे। 도로에서 술판을 벌여 음주 가물을 즐기는 여자 리나. 벵갈루루의 실세 라젠드라 대사에게 딸입니다. 미모에 반해버린 로키는 홀린 듯이 다가가 주접을 떨어대죠. Congratulations. Why? I love you. How dare you? खड़े देख क्या रहे हो? मारो इसे! इधर से मैं 주접뿐만 아니라 머리털을 쓸어제끼며 매력 어필까지. 술랑기는 자상행이죠. 이 여자 눈치 겁나 빠르고 अच्छे से ख्याल रखना। I will coming soon. हाँ? तू ही रॉकी है क्या? 곧이어 앤드루스를 만나 비즈니스에 대해 묻습니다. काम बोलो साहब। एक हाथी को मारना है। 납치와 강제노역, 무자비한 학살을 일삼는 잔혹한 인간 가로다라는 인물을 암살하는 일입니다. 한편 리나는 전날 밤 수모를 복수하기 위해 로키를 찾고 있습니다. होटल से किसी को भी बाहर मत निकलने देना। सारे रूम चेक करने हैं। अरे ये खोलना। No. 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 You came for to see me? आप उनके बिना रह नहीं गया तेरे से। I'm going to kill you. I am already dead जानू। खोल बे। एक मिनट जा। Oh God. ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा. और सुना ऐसा आगे से तुम आना नहीं है। I understand urgency. जल्दी शादी कर लेंगे। 지 혼자 긴 찍고 한 삽을 들이키며 상상 속 연애에 푹 빠진 로키. तुझसे प्यार करूंगी ये तूने सोच पे कैसे लिया? 그런데 그때 빵을 떨어뜨리며 안절부절 못하는 여인이 눈에 밟힙니다. 급기야 도로를 막아서고 사방에서 항의가 빗발치는데 갑자기 입을 닫고 차 속으로 몸을 숨기는 사람들. 여인에게 다가가 빵을 주워주며 어머니의 위대함을 말해줍니다. इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। 로키의 따뜻한 모습에 마음이 흔들린 걸까요? 온순한 모습으로 변해 있는 리나. सुना तुम कुछ बोल रही थी ना? मुझे घर ले चलो. ओके. 밤이 되자 클럽에서 음악을 즐기는 리나. 역시나 그녀 앞에 나타나 느끼한 눈으로 아이 컨택을 시도하는 로키. 리나를 짝사랑하는 카미는 로키를 손봐주기 위해 클럽으로 향합니다. तू कहां से आया है मुझे नहीं पता। गलती कर दी तूने। And now it's too late. 그때 카미를 막아서며 목숨을 담보로 चाहत की भी एक औकात होती है, वो भी मेरे जैसी से. अगर तूने मुझे इन सब के सामने छू लिया, तो मैं तेरी. 무모한 도전을 제안합니다. 그런데 사랑을 포기하고 꽁무니 빼는 로키. 자신에게 다가올 줄 알았던 리나는 실망합니다. 과연 쫄은 걸까요?
मैच बॉक्स है क्या? 역시나 화려한 퍼포먼스를 위해 작정상 후퇴했던 로키. 털끝 하나 건드렸다가 클럽은 불바다가 됩니다. 성냥불은 손바닥에 가볍게 지져주고 카사노마도 울고 갈 대사를 날려대죠. ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता. 진지한 말발에 홀딱 넘어간 니나. 그때 벵갈루르의 실세 라젠드라 대사이가 등장합니다. 사실 로키가 이곳에 온 목적은 ससुरा आ गया. 가루다루 죽일 계획을 말하기 위해서이기도 했습니다. कौन है ये? गरुड़ा को उड़ाने वाला हथियार. ये क्या प्लान बनाया है? गरुड़ा दूसरे रास्ते से ही आएगा. 며칠 뒤 정당에서 행사가 있는 날, 좁은 도로를 지나는 가루다를 암살할 계획을 세웠지만 뭔가 이상함을 발견한 로키였죠. 며칠 전부터 수상한 빈 차들과 बहुत दिनों से खड़ी गाड़ियां, खाली टैक्सियां, सब 수상한 상인들이 즐비해 있고 वो सब लोग जिन्होंने अभी घर किराए पर लिया है. 수많은 주택들이 렌탈했다는 건 가루다의 똘마니들이 잠복하고 있다는 뜻이었죠. हम उसे वहां नहीं मार सकते. तो फिर DYSS पार्टी ऑफिस के अंदर ही मारूंगा. क्या बात कर रहा है? हर जगह पुलिस होगी, गेट पर भी पुलिस होगी, मिनिस्टर्स की भी चेकिंग होगी. अगर एक बार अंदर मेरे हाथ में गन मिल गई, गन मिलेगी. 드디어 가루다가 들어서고 순차적인 암살이 진행되는 그 순간 순식간에 돌변한 웨이터들이 총구를 들이댑니다. 몇 수 앞을 내다보는 가루다의 함정에 걸려버린 암살계에 자신의 적이 누구인지 알 수 있는 확실한 덫이었죠. मेरा बाप तुम लोगों पर बहुत भरोसा करता है. 1951년 우물을 파는 농부들에 의해 금이 발견된 그 정부 관료인 수라바르라는 마을을 찾았습니다. 황금의 눈이 먼 그는 비밀을 막고자 정부 관료들을 모조리 죽여버린 뒤 KGF의 땅을 자신의 왕국으로 만들어 사람들을 강제로 끌고 와 금강채굴의 노역군으로 만들었습니다. 어느 날 갑자기 지병으로 쓰러진 슈라바르단. बोल तेरे बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? 왕국의 계승자로 친동생 아데히라와 첫째 아들 가루다 둘 중 한 명을 선택해야 했습니다. भैया जैसे तू इतने साल बिना किसी लालच के मेरे पीछे खड़ा रहा, वैसे ही अब तुझे गरुड़ा का साथ देना है. भैया ने बोल दिया तो बात खत्म. जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं. 왕국을 차지하려면 가루다를 제거해야 했던 아데히라. 하지만 암살은 실패해버리고 역으로 당해버립니다. 가루다는 아버지가 죽게 되면 KGF를 탐하는 자들을 모조리 제거하기로 계획했죠. मेरे बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है, मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा. KGF의 눈독들인 벵갈루르의 실세들과 로키마저 슈라바르단이 죽는 즉시 가루다의 제거 대상이 돼버립니다. मुझे लगा कि उसे मार सकते हैं, उस दुनिया को पाने के लालच में. अगर गरुड़ा अभी नहीं मरा तो हम सब पक्का मारे जाएंगे. मतलब अब वहां पर जाओगे? उस जगह पर? उस नर्क में कोई जा सकता है क्या? 난센체는 느껴보는 위압감과 패배감에 자존심에 스크래치가 난 로키. 호랑이 굴로 들어가 가루다를 제거하려 합니다. जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा. इसे कभी भी खोना मत. 엄마의 유품을 사랑의 징표로 남긴 뒤 떠나는 로키. वहां जाने के बाद हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा. जब तुम्हारी तैयारी हो जाए मुझे एक सिग्नल देना. पापा रॉकी कहाँ गया है कुछ
अरे वही इसका आशिक जहां गया है वहां से वापस नहीं आ पाएगा। ये आप बताओगे या मैं बताऊं? क्या हुआ? किसने किया? पहले ट्रक को यहाँ से निकालो, वहाँ इंतजार कर रहे हैं। 강제 노역에 끌려가는 사람들 틈에 끼어 KGF로 잔입하는 로키. 슈라바르다는 왕국을 지키기 위해 3중으로 보안을 구축했습니다. 첫째는 거대한 벽, 둘째는 거대한 문, 그리고 이곳을 지키는 무자비한 총사령관 바나남. 보안이 철저한 이곳에는 나라치라 불렸습니다. इन नए कुत्तों को लेके जा। 2만 명 이상 감금된 이곳은 개미 지옥과도 같습니다. आप सब लोगों को यहाँ लाया गया है माइनिंग करने के लिए। 광산의 지형과 경비들의 위치와 숫자를 꼼꼼히 파악하는 로키. 900 फीट की गहराई में काम होगा। पहले दिन थोड़ा डर लगेगा, बाहरी दुनिया को भूल जाओ। काम करने की बजाय नहीं नया है। काम पे लगाओ। पहले ही दिन दफन होना चाहता है क्या? यहाँ के रीति रिवाजों को जितना जल्दी सीखोगे वही बेहतर होगा। 일꾼들 안에 스며들어 튀는 행동을 자제하며 완벽한 암살 타이밍을 노려야 됩니다. 그러기 위해선 KGF의 정보가 필요했죠. 꼬마들에게 친근하게 접근해 경비들의 위치를 알아냅니다. गेट पे गार्ड, दीवार पे भी गार्ड्स, वॉच टावर पे गार्ड, माइनिंग पे गार्ड्स। 마지막 핵심 장소인 갈리부서, 성으로 연결된 비밀 통로의 지도가 있는 곳입니다. 즉 가루다의 목을 딸 수 있는 유일한 통로를 알 수 있는 곳이죠. 그러던 어느 날 한 사건으로 인해 일꾼들의 일원으로 녹아들게 됩니다. 절대 어겨선 안 되는 규칙 중 하나. 백색선을 넘는 즉시 총사됩니다. जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि ये अंधा है, उसी दिन इसे भी दफनाना पड़ेगा। अगर उन्हें पता चला कि इनमें काम करने की शक्ति नहीं है तो यहाँ ना स्वर्ग है ना नरक, ना अच्छा है ना बुरा, ना ही कोई आस्था। इन सब का कारण है गरुड़ा। 드디어 상상 속 시뮬레이션을 실행에 옮기는 로키. 남자를 밀어 시선을 돌리고 불을 붙입니다. 불난 곳으로 인원을 분산시킨 뒤 102 लोग होने चाहिए। 1 से गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 잽싸게 빠져나가죠. 29, 30, 38, 39,
계산된 타이밍과 날렵한 뚝배기. 완벽하게 성공했지만 हमें भी लेके चलो मैं जानता हूँ मुंह खोला तो जान से मार दूंगा 임신한 아내와 지옥 같은 이곳을 탈출하고 싶던 남자에게 들켜버렸습니다. मैं तेरे पैर पड़ता हूँ 그 시각 मेंटेनेंस रूम में जो हादसा हुआ उसके पीछे जरूर किसी का हाथ है लगा किसी ने हथौड़ा मारा सा नहीं सिक्योरिटी होने के बावजूद वहाँ किसी ने घुसकर नक्शा देखा है परसों जो बैच आया है उसमें से कोई एक शायद आपको मारना चाहता है ऐसा क्या? तो फिर उस बैच में काम करने वाले सभी लोगों को खींच कर ले आओ। 완벽할 줄 알았던 시나리오는 한순간에 죽음의 시험대로 흘러갑니다. मेंटेनेंस रूम में जो घुसा था अगर वो खुद बता देगा तो सिर्फ एक की मौत होगी वरना सारे के सारे मारे जाएंगे बंदूक 자신 때문에 모두가 죽을 위기, 위험 요소들을 체크하며 어떻게 해서든 방법을 찾으려 합니다. कौन है वो? पता है तो बता दो। तुम सब बच जाओगे। 남자는 아내를 쳐다본 뒤 갑자기 뛰더니 가로다의 칼을 잡고는 자신을 희생합니다. जिसे तलवार तक पकड़ना नहीं आता, उसे मुझे मारने के लिए भेजेंगे। हेलो लॉकिंग को ठोक दिया 한편 안타까운 상황이 또다시 발생합니다. लड़की हुई है। 노여기를 할 수 없는 여자아이가 태어나면 죽여야만 하는 잔혹한 규칙이 있습니다. इसी बच्चे के लिए कल इसके बाप ने अपनी जान दे दी हमें भी लेके चलो अगर कल वो सामने नहीं आता तो सबके साथ उसकी गर्भवती बीवी को भी वो लोग मार देते 일꾼들의 지옥 같은 삶에 서서히 동요되는 로키. 암살 계획에 차질이 생길 것이 분명했기에 외면하려 애쓰죠. माँ जिस काम के लिए आया है वो देख जल्दी निकलो रे, जल्दी निकलो रे। पगड़ी उतार 장님인 게 들킨다면 그 즉시 처형됩니다. उतार पगड़ी डाल टोकरी में बचा ले जिंदगी 지금 나선다면 암살 계획은 수포로 돌아가는 상황. नहीं रोके 그렇게 노인은 처형장으로 향하게 되고 흰가부를 갈망했던 빈곤한 어린 시절과 일꾼들의 지옥 같은 삶이 교차되며 रुक क्यों गया रे चल रहा 결국 외면하지 못하고 저질러 버리죠. ना ऊपर किसी को उड़ते देखा है। लाइट को क्या हुआ 일꾼들은 한마음으로 처형을 원했습니다.
और पिक्चर में कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। 시체들을 태운 불은 활활 타오르고 자신이 살아있음을 알리는 로키. रॉकी अभी जिंदा है, उसने सिग्नल भेजा है। झोपड़पट्टी के पास एक बड़ी आग लगी है। माइंस के 23 गार्ड्स लापता है। सब लोग वहां पहुंचो जल्दी, अभी। 가루다를 배신한 자신들이 로키의 배우란 걸 들킬 수 있는 상황. उन गाड़ियों को रोकना होगा। कुछ तो सोचो, कुछ तो करना होगा। पिताजी गुजर गए। 사실 가루다의 동생 비라트는 형을 시기하고 있었고 이 모든 계획의 조력자였습니다. बड़े सरकार गुजर गए। 모든 상황을 멈출 수 있는 유일한 방법은 아버지를 죽여야만 합니다. बड़े सरकार गुजर गए। 아버지가 죽자 그동안 참아왔던 칼춤을 실행하는 가루다. कल सुबह तक मेरा कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं रहेगा। आज माइनिंग का काम रोककर सब पर निगाह रखो। सफेद लाइन के पास सिक्योरिटी बढ़ा दो। 광산의 불과 경비들의 실종으로 가루다의 보안은 더욱더 강화되고 로키의 암살을 초조하게 기다리는 이들. यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे नाराजी की बिजली चली गई है। 그 시각 가루다는 적들을 해치우기 전 여신을 위한 기도의식을 준비하고 있습니다. शॉर्ट सर्किट सफेद लाइन के पास हुआ है सर। किसी ने कॉपर के तार को पत्थर से बांधकर बिजली के तारों पर फेंका है, जिससे नाराजी का पावर डाउन हो गया है सर। बिजली जाने के 10 सेकंड के अंदर जीप और टॉर्च की लाइट्स ऑन कर दी थी। उन 10 सेकंड में हमारी नजर से बचकर किसी का सफेद लाइन को पार करके जाना नामुमकिन है सर। पूरे नाराजी में सिर्फ एक ही टनल है जो सीधा महल तक जाता है। 의식에 쓰여진 재물은 과거 가루다를 죽이려 했던 3명의 암살자들. 한편 감옥에 들어선 총사령관 바나나. रमन्ना वो यहीं पर है। रमन्ना सिग्नल नहीं मिल रहे। रमन्ना 그가 발견한 것은 기도의식의 제물로 쓰여진 남자의 시체. 이것이 의미하는 것은 वो यहीं पर है। रमन्ना रमन्ना 제물들 사이에 로키가 있다는 뜻이죠. साहब, वो जो 3 कैदी काल कोठरी में बंद थे, उनमें से एक वहीं मरा पड़ा है। संभाल अपने बिजवा के, ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। सबको साथ लेके मारा मारी करने निकला था। खुद तो बिगड़ा है हमारे टोली बनाकर मारने गया था, अकेले जा। अरे राम, मार दिया सर। मार दिया सर। हिंदुस्तान से खबर है। मैडम KGF में भाई गरुड़ा मर गया। 죽은 줄 알았던 아드이라가 살해했습니다. 금강을 둘러싸 세력들의 긴장감을 늦출 수 없는 짜임새와 박진감 넘치는 화려한 액션이 카타르시스를 선사하는 영화 KGF 챕터 1이었습니다. अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। अकेले जा।